Hi guys, welcome to the channel. Guys, if you're starting for RBI Grade B right now with around 4 months left, वैसे 4 से थोड़े ज़्यादा पड़े हैं, but let's take that time as buffer, whatever is extra time. So with around 4 plus months left, I think the first step or the one thing that you need right now कि आपको एक अच्छा सा study plan मिल जाए. अच्छा सा मतलब which is doable and which is logical. राइट डुएबिलिटी भी तभी होगी विच इज लॉजिकल इन अ सेंस विच इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड विच हेल्प्स यू डिवाइस अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी. तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल. और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. इन केस यू आर स्टार्टिंग फॉर आरबीआई, आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे होंगे. आरबीआई करती क्या है, आरबीआई में क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, आरबीआई एग्जाम में क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, सैलरी कितनी है. बहुत सारे क्वेश्चंस यू वुड बी सर्चिंग ऑन इंटरनेट हेयर एंड देयर एंड यू वुड बी वेस्टिंग लॉट ऑफ योर टाइम. बट आपको फिर भी एक डेफिनेटिव आंसर्स नहीं मिल रहे होंगे. इन केस यू वांट सम डेफिनेटिव आंसर्स इन द क्विकेस्ट वे पॉसिबल, दिस गाइड इज फॉर यू. आरबीआई कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजर गाइड विच कैन हेल्प यू गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस इन नो टाइम. बहुत छोटी है, बहुत कलरफुल है. आज ही इसको डाउनलोड कीजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड दिस इज एंटायरली फ्री. एंड आई बेग योर पार्डन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो. आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे. देयर इज लॉट ऑफ कफ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू नॉट हैव एनी इंटरप्शन इन दिस वीडियो. थोड़ा बहुत आएगा, प्लीज बियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट वुड बी एट द टॉप ऑफ योर माइंड, इज इट राइट टाइम टू स्टार्ट? Well, that depends upon a lot of factors, guys. The foremost being obviously your commitment. आपका commitment कितना है, आपका background क्या है, have you prepared for at least other banking exams where you are prepared for quant, reasoning, English. मतलब ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करेगा. But one thing that I want to tell you कि ज़्यादातर when we talk about प्रिपरेशन वी नॉर्मली मोटिवेट आवरसेल्व्स कि मैं कर लूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा. दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट. आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. आई एम एज्यूमिंग यू विल डू दैट, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क. और मैं ये भी नहीं कहूँगा इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क, बिकॉज स्मार्ट वर्क ऑल्सो यू विल लर्न ओनली थ्रू हार्ड वर्क. बट अलॉन्ग विद हार्ड वर्क यू नीड अ राइट स्ट्रैटेजी. अगर सिर्फ हार्ड वर्क करके पढ़ेंगे, यू माइट एंड अप even not completing one subject in the next 4 months and then also not scoring good in that. But एक right strategy and obviously right sources, ये दो RS हैं आपकी तैयारी के which can help you take and cross the line. तो right time है start करने का, but hard work तो चाहिए ही, but उसके साथ only if you apply your mind, learn the right strategy and right sources, then only you can crack this exam. ये बात हमेशा याद रखना. This exam is not about hard work. And I've seen students committing so many mistakes that they end up wasting their time. And by the time exam is very near, they are like, sir, तैयारी तो हुई नहीं, हम तो कुछ गलत पढ़ते रहे. तो आप वैसा मत कीजिए. और इसी वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान देने वाला हूँ. इसको ध्यान से समझिए. इन केस यू हैव एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस. सो दिस इज द प्लान विच आई थिंक at this point in time can help you. ठीक है, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है. 4 to 5 months is not less. एक आपने ग्राफ देखा होगा, ऐसा ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल. With each passing month, your possibility of cracking this exam here, if you're starting from scratch, is going to decrease like this graph. So this is a very good time. Don't worry about that, but just follow this plan. This is a very logical plan, right? Here we are telling you to do 2 subjects at a time and in this particular order what I am telling you here. This is very important. I'll tell you why. From December to 10th of Jan, right, December has just started, you should be focusing on FM, quant and FM answer writing, which is just part of FM itself. So here I am just asking you to focus on 2 subjects, FM and quant. Then from 10th Jan to 15th of Feb, that we have almost like 35 days here where we should be focusing on ESI, reasoning. These are the 2 subjects mainly we shall be focusing on. And then from 15th of Feb till 15th of April, we shall be focusing on current affairs. Now, why I am telling you to study this in particular order is, first,
FM is very scoring. 80 plus marks can be scored there. So do that first. It is static, can be managed easily. So people normally do mistake of starting ESI before FM. Worst mistake you can do. Then I'm asking you to do current affairs later. Here you might be wondering, itna late ho jayega. But guys, till the time you don't cover your static part, you will always struggle in current affairs. And moreover, 2 months is a sufficient time to do current affairs, and if you do them late, you will require less revision. You will retain them better. Right. And यही चीजों को ध्यान रख के ये प्लान बनाया गया है. करंट अफेयर्स को बाद में करना है, एफएम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना है, एफएम को ज़्यादा टाइम देना है, ईएसआई को कम टाइम देना है. I mean, there is a lot of thought process behind this study plan, which I cannot tell you elaborately, but that comes from experience. So, दो ही subject पढ़ने हैं. Do not start with everything at one go. You will just feel that you are being busy but not productive. And revision and practice is the key. You will see I have specifically mentioned practice, revision, practice everywhere here, because I know two things that people do not do in spite of doing everything right. Are revision and practice. तो आपको ये करना है, and focus is the key, guys. I've told you before also, with this study plan being at your hand and you executing it properly, focus is the key. रोना धोना नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वर्किंग हूँ. यार हर साल if you see more than 50% of the people who clear this exam are working. उन्होंने भी मैनेज किया था. It's not about focusing, right? It's not about managing your time. I think you need to manage your focus. You know, this thing in our life, mobile phones here, we normally waste 3 to 4 hours in a day, normally, just for looking up things which we don't require, just going to Facebook and all, or WhatsApp, total waste of time. So we have a lot of time. The idea is to manage your focus. You will obviously be able to manage your time. ठीक है, तो अभी इसी प्लान को we will discuss in more detail. First is FM, guys. I am giving you around 40 days to complete FM. You have around 15 chapters in management and around 25 chapters in finance. If I go by EduTap course, आप अपने आप भी तैयारी कर रहे हैं, almost इतना ही होगा. So for management, we have to cover in 15 days. 1 day, 1 chapter. And in management, all the chapters are important. If you see the previous year questions, we have made a lot of videos. Either they will ask you objective or subjective, but they will ask you mostly from all the chapters. So don't leave any chapter and don't be bookish while reading management. Management looks easy and it's easy also, but you also need to understand the concepts. Questions exam में application based आएंगे. Solve lot of MCQs. सिर्फ पढ़ के मत जाइएगा. Solve lot of MCQs. And in case you are reading from EduTap course, just skip videos, guys. 15 दिन में 15 चैप्टर तभी हो पाएंगे if you skip videos. Focus on concept notes, MCQs. And your target score should be 40 to 45 in management. FM में ओवरऑल एवरेज स्कोर 75 है फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स. आपको 80 टारगेट करना होगा और उसके लिए 45 नहीं तो 40 तो स्कोर करना ही मैनेजमेंट में. वेरी इजी, यू कैन स्कोर इट. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट FM, 15 days to management, remaining 25 days to cover finance. Scope ज़्यादा है, but I would say spend first 15 days on covering these chapters: primary, secondary markets, risk management, inflation, derivatives, functions of RBI, monetary and fiscal policy, and who regulates what. These are the most important chapters. If you can cover them in 15 days, rest 10 days which are left out of 25, that can be used to read other chapters, but other chapters are important only from descriptive perspective. न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करना है. पिछले 3 साल में न्यूमेरिकल 0 नंबर के आ रहे हैं. और अगर आप EduTap के कोर्स से पढ़ रहे हैं, 8th चैप्टर के बाद यू कैन स्किप वीडियोस. टाइम है तो देख लीजिए. ऑब्वियसली वीडियोस आर अ गुड वैल्यू एड. यू विल अंडरस्टैंड इवन बेटर बाय वाचिंग द वीडियोस. बट टाइम नहीं है, देन दिस इज अ स्ट्रैटेजी. वर्किंग कैंडिडेट्स के पास स्पेशली टाइम नहीं होगा. और फाइनेंस में भी आपको 35 टू 40 टारगेट करने हैं. 45 वहाँ, 40 यहाँ, तब 85 बनेंगे. मिनिमम 75 तो लेने ही लेने हैं. और FM फाइनेंस में आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं. फॉर दैट RBI नोटिफिकेशंस इज द टॉप मोस्ट कॉल आई वुड से दैट यू शुड बी डूइंग. यहाँ पे आपको 6 महीने की RBI नोटिफिकेशंस करनी है. मेनी अ टाइम्स RBI नोटिफिकेशंस आर टेक्निकल, बट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद कर लो, भले ही डिटेल में मत समझो. उसके बाद FM में जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, सबसे पहले तो ये है कि लोग आंसर राइटिंग नहीं लिखते हैं. दे लीव इट टिल द एंड. तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि आंसर राइटिंग करो. And the quizzes that you should be giving for FM as part of practice MCQs.
Do not give any quiz immediately after reading a chapter. Have a time gap of at least 7 days. That will actually help you check your retention. और न्यूमेरिकल जैसा मैंने बोला ज़्यादा नहीं करने हैं, टाइम वेस्ट है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना. क्वांट में सी देर इज नो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आई वुड से. क्वांट में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यू हैव 25 मिनट्स इन एग्जाम एंड यू हैव 30 क्वेश्चंस. आप 25 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन कर पाओगे जैसा लेवल होता है पेपर का. सो वाई डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर 30 क्वेश्चन? आई डोंट थिंक देर इज एनी लॉजिक टू इट, स्पेशली इफ यू आर लेस ऑन टाइम. तो आप कम चैप्टर्स कर लो, 12-13 चैप्टर्स कर लो, बट डू देम प्रॉपरली. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. वॉट एवर चैप्टर्स आर डूइंग, डू हार्ड लेवल क्वेश्चंस ऑन देम. By doing just basic reading or basic theory of all the chapters, you will end up nowhere. एग्जाम में 30 में से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा. The better is that you select chapters by yourself. कोई भी कर लीजिए, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं which you feel that you have a natural affinity towards them. उनको अच्छे से कीजिए. और आप FM में 7-8 मार्क्स का टारगेट लेके, क्वांट में 7-8 मार्क्स का टारगेट लेके चलिए अगर पेपर मॉडरेट लेवल का है. If you will see the cutoffs in the past 5 years, they have never exceeded 7.5. तो मुझे नहीं लगता कि इस साल भी कट ऑफ ये एक्सीड करनी चाहिए, though there is no guarantee to it, but I think this is something that you can consider if you want to have a target score. और अगर पेपर मुश्किल आता है, then the cutoffs which I have seen is they even go somewhere around 4 to 5. तो ज़्यादा मार्क्स क्वांट में आने भी नहीं वाले और लेने का फायदा भी नहीं है. आई थिंक द मोर टाइम यू शुड स्पेंड ऑन GA बिकॉज देयर द रिटर्न इज बेटर. बाकी इसकी बात मैं कर ही चुका हूँ. आंसर राइटिंग और MCQs बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं. फॉर FM आई वुड से 2000 से 3000 MCQs यू शुड बी सॉल्विंग. दैट ओनली विल हेल्प यू चेक योर अंडरस्टैंडिंग. और आंसर राइटिंग में FM में मोस्टली द क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट, बुकिश. What I have seen is over past 2 years in the 2 exams that whatever model questions we have been giving to our students directly उसी में से आ रहा है, because they are very direct. ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ फाड़ू दे रहे हैं, but they're very direct, so anybody can predict those questions. और बहुत ज़्यादा सिलेबस के टैग से रिलेटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडियाज रिस्पॉन्स इन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, डायरेक्टली फ्रॉम दिस सिलेबस टैग. आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू personal and interpersonal communication directly from the syllabus tag. I mean, anybody can predict this. So, बहुत predictable है FM descriptive. If you read FM theory and you attempt some standard 60-70 descriptive answers, you will get straight away questions from that. Now, coming to ESI, guys. So here ESI syllabus is very vast, and normally the mistake which people do is they try to cover ESI end to end, the syllabus of that. ESI has a very less weightage with respect to static, and normally the paper is current. So static part के लिए you just need to have basic knowledge of economics, and for that I would recommend you these 5 chapters: inflation, balance of payment, monetary policy, fiscal policy, and growth and development. You can even add poverty alleviation to this and sustainable development. यहाँ से भी question आ जाते हैं. Once you understand these chapters, the advantage is that exam में जितने भी objective questions आएंगे static part में से, most probably they would be from these chapters. And secondly, you will be able to understand all the current affairs in the newspapers or the editorials after reading these chapters, because these are core part of your economics. तो इनको पहले करना है, बाकी chapters को छोड़ना नहीं है. I would say just give 1.5 hour to every other chapter and read it, because in descriptive they can ask you from anywhere. Reasoning में you have to follow the same strategy as I told you earlier, right? For quant you have 45 minutes in reasoning and 60 questions. You can't do them. At the max you will be able to do 25 questions, and the cutoffs are around 15 to 18, what I have seen over past 5-6 years. These are on the maximum range when the paper has been of moderate level. तो ज़्यादा सारा सिलेबस करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एनीवेज यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. जैसे कि बहुत सारे लोग दे आर वेरी मच वरीड अबाउट सिटिंग अरेंजमेंट्स, पॉजेस एंड ऑल दोज थिंग्स. I mean, it's okay if you are not good in that, but at least be good in other topics like coding, decoding, syllogism, blood relations, input, output, all those topics. Even if you are good in that and mediocre or not at all good in puzzles, you can still ace reasoning section. बिकॉज आपको यहाँ पे कोई मतलब फुल बटा फुल मार्क्स नहीं लेने हैं. यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ.
ESI आंसर राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, लाइक FM आंसर राइटिंग, एंड दिस वुड बी द टाइम फ्रेम वेयर यू नीड टू प्रैक्टिस ESI आंसर राइटिंग. द क्वेश्चंस इन ESI आर नॉट बुकिश लाइक इन FM. दे आर लिटिल बिट ट्वीक्ड, कॉम्प्लेक्स होते हैं. सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ESI. सो आपके जो लोग IUTEP के कोर्स में हैं, दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस already. I would say they have around 300, if not 300, 250 plus questions, जिसमें previous year questions भी हैं. उनको अच्छे से कीजिए. You will get an idea that what kind of questions can come in the exam. Or do read editorials. These can help you write some good content in your answers. Very, very important. Editorials on daily basis from Hindu, or if you get time from Lyman, but Hindu should be your first priority for ESI. ठीक है. और यहाँ पे हमें रिवाइज ज़रूर करना है FM को जो हमने यहाँ पढ़ा था, बिकॉज नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन इज by the time you reach here you will be more worried about that, sir, I don't remember anything, than going forward. So revise it here only so that you have that confidence कि मुझे सारा आता है. ठीक है. और ESI के प्रैक्टिस MCQ ज़्यादा नहीं करने हैं बिकॉज दे डोंट आस्क यू मच फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट. फिर भी जो मैंने चैप्टर बोले हैं उसमें से 200-300 MCQs भी अगर आप कर लें, दैट वुड बी अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. Current affairs is a very important pillar, and I have kept it in the end because the later you do it, obviously you might have to hold your nerves, but the better will be your retention. तो करंट अफेयर्स में आपके 4 पिलर्स हैं, और ये चारों पिलर्स आपके फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. RBI नोटिफिकेशंस जो कि FM में आती हैं अराउंड 6 to 8 मार्क्स इन फेज 2, और फेज 1 में भी आती हैं, right? That is also around 8 to 10 marks in phase 1. Government schemes, they are asked 20 to 25 marks in phase 2 and around 8 to 10 marks in phase 1. Reports and indices, again 10 marks in phase 2 and around 5 marks in phase 1, right? And ESI, FM and GA, normal current affairs in economics, finance and GA, they are also important for your exam, which are also asked in phase 1 and phase 2. GA phase 2 में नहीं पूछते हैं, but ये वाला पार्ट दोनों में पूछते हैं, phase 1 and phase 2. Now the first question that everybody has in their mind is कितने महीने के current affairs पढ़ें. So here there is a very simple rule that you need to remember in all these pillars. The thumb rule is 3 to 5. 3 to 5 months for phase 1 and 6 to 8 months for phase 2. Why 3 to 5? Ideally go for 5 and 8 here, but in case you're working, you're lazy, you're starting late, you don't have time, 3 months can also help you crack the exam. मतलब कभी भी डाउट हो, टाइम कम हो, पूरा करना impossible हो जाए, then your first target should be 3 months for phase 1 and 6 months for phase 2. ये सारे pillars में same ही strategy है, there is no difference. And I'm not saying this just because I feel it, we have analyzed it year by year and we have seen the same pattern is being followed. तो इसको आप कीजिए अच्छे से, ठीक है. बाकी RBI notifications में, I mean, don't, in case you are doing from self preparation, do not read it from RBI website. Rather, whatever notification comes on RBI website, search the same in some newspapers because they would explain the same in easy language. तो ये ऐसे कर सकते हैं. Government schemes, normally they can ask you from any year which is in news. Maybe the government scheme is of 2010-2000, but if it is in news in past 6 to 9 months before your exam for phase 2 and 3 to 5 months of your exam for phase 1, it can come in your exam. What do I mean by saying that it should be in news? In news means that it should be covered in media either for being launched, updated, or for anything. Maybe say, somebody criticized it, somebody praised it, for any reason. So basically 2 very important sources for schemes from where they are actually asking you schemes are PIB and Hindu. So what we have seen is that if any scheme is being covered in 6 to 9 months on PIB or Hindu, these 2 medias, they are a very good target to be asked in the exam. Almost 80% are from PIB and Hindu. तो सारी schemes नहीं पढ़नी है, only which are in news, irrespective of when they were launched. If they are in news 6 to 9 months before your exam or other 6 to 8, they are important for you. Reports and indices, maybe there are a lot of reports being released. First is read reports only related to your syllabus. Do not read any random report. If there is a report on the oil sector, construction sector, media sector,
it is of no importance to you because that is not related to your syllabus. But if there is a report related to education, health, gender issues, social justice, it becomes very, very important for you. तो syllabus related पढ़नी है and do focus on reports released by national or international organizations such as World Bank, IMF, UNICEF, UNESCO, Asian Development Bank, then OECD, इंटरनेशनल लेवल पे. नेशनल लेवल पे क्या होगा? आप RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी, नीति आयोग. I mean, these are the major bodies whose report are being asked in the exam. Do not read any report by Moody's, Credit Suisse. They can come, but the weightage is very less. So do not waste your time on something from where you can get 1 mark. Rather, invest your time in something where you can get 10 marks. तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स पढ़नी है और ये रिपोर्ट्स पूरी नहीं पढ़नी है, इनकी कवरेज आपको न्यूज़पेपर्स में से पढ़नी है. सो इफ यूनिसेफ हैज रिलीज एनी रिपोर्ट, वट एवर in relation to that report is being covered in Hindu, Economic Times, Alignment, pick up 2-3 newspapers and read that. That information is more than sufficient. There is no need to go through 100 pages of the reports. ठीक है. बाकी ESI FM में जो भी आपके नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं और GA, एक नॉर्मल GA जो बैंकिंग में आती है वो भी आपको करनी रहेगी. ठीक है. तो ये है आपके 4 पिलर्स. The caution that I want to give you is that please select your sources very carefully because normally I've seen people picking up sources for banking to cover current affairs, but they will not cover RBI notifications or government schemes or report indices to the same extent as they are asked in your exam. तो वो बैंकिंग के लिए अच्छी हैं बट RBI के लिए अच्छी नहीं है. ठीक है. सो यू विल फील दैट GA इज वेरी टफ एंड नॉर्मली पीपल क्राई आफ्टर द एग्जाम कि सर GA पता नहीं कहाँ से आती, हमें पता है कहाँ से आती है बट आप गलत सोर्सेज पढ़ रहे हैं. बाकी करंट अफेयर्स में गाइज न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश मत कीजिए. इट इज़ नॉट फीजिबल टू सस्टेन दैट ओवर द नेक्स्ट 6 months. मेक योर ओन नोट्स एंड ऑल. I would not suggest so. Rather read some compiled magazines. Newspapers can only be used to read editorials. That's it. Reading is one thing, but you have to revise current affairs regularly. Even if you are able to cover, say, just only 80% and not 100%, that is fine, but at least revise once. And always read current affairs, especially for phase 2, by mapping to your syllabus. That is very, very important. Otherwise, it will be like Pandora's box for you. बाकी मॉक टेस्ट आपको इसी पीरियड में देने हैं बिकॉज बाय दिस टाइम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर सिलेबस वुड बी कवर्ड. I would say that please give mock test only twice a week. Do not rush through. I've seen people giving 5 mock tests in a week. I mean, it will just make you too tired and you will not be able to give your best. And give mock test of very difficulty levels. आसान, मुश्किल, बहुत मुश्किल, सारे लेवल्स के दीजिए. नाउ पीपल आर नॉर्मली अज्यूमिंग दैट अगले साल भी पेपर डिफिकल्ट होगा. ज़रूरी नहीं है. आई हैव सीन कट ऑफ्स from 78 going to 122 within a span of 2 years. The same can happen now. Don't assume कि जैसा पिछले साल पेपर था वैसा ही आएगा. This can be the biggest mistake. Right. बाकी QRE practice करते रहिए guys. I think during this period you shall be solving at least 10 questions in 30 minutes. One day each for quant and for reasoning on alternate days. This is very, very important to keep the flow going in your mind. बाकी करंट अफेयर्स के बहुत सारे MCQs कीजिए. सोर्स एक रखिए और मैं इसको 1.5 कहता हूँ कि 1 सोर्स फॉर रीडिंग एंड 1.5 सोर्स के MCQs एक यहाँ से और एक अलग सोर्स से कर लीजिए सो दैट you also get a different flavor. But do not read from 2 sources and solve a lot of MCQs. For current affairs, MCQs are the best source of retention. Or during this period, if you get time, though this would be very tiring period where you will feel like totally getting drained, but if you get time, revise ESI because again I don't want to get that feeling where your confidence becomes low because you just feel कि मैंने revise नहीं किया. ठीक है. बाकी guys ये plan देखने में बहुत अच्छा है but I know while you start executing this there would be a lot of challenges. You will actually struggle to execute this. But trust me, I mean every RBI Grade B officer once was a struggling aspirant. Everyone. And so are you. Don't take your struggle as something which is unique to you. Struggles will never stop. I would say even after you get into RBI, your struggles will continue. In fact, they will increase because you will
You will face new challenges every day. You will have to take ownership of complex tasks, but you will enjoy it. Seriously. So struggle से नहीं डरना है. उन्होंने भी स्ट्रगल की थी, उनके पास भी सेम टाइम था जो जिन्होंने क्लियर किया, उनके पास भी सेम रिसोर्सेज थे, उनके पास भी सेम तरह के सेल्फ डाउट थे, बट दे वन ओवर इट. दे वन ओवर देयर स्ट्रगल. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. स्ट्रगल सबकी सेम है. कुछ लोग उस स्ट्रगल के अंदर दबकर मर जाते हैं, सो जाते हैं, बट देयर आर सम हु फेस दैट स्ट्रगल हेड ऑन कि नहीं, आई डू इट. ऐसा करने से आई एम नॉट सेइंग यू विल डेफिनेटली क्लियर, बट यू इफ यू विल गिव वे टू स्ट्रगल टू इम्पैक्ट यू, यू विल डेफिनेटली नॉट क्लियर. तो स्ट्रगल से बिल्कुल नहीं डरना है. और अगर चीज इतनी अच्छी है और बिना स्ट्रगल के मिलती तो शायद अच्छी भी ना होती. राइट. सो स्ट्रगल हमें करनी है. एंड वी हैव टू टेक एन ओथ टुडे दैट वी विल ओवरकम आवर स्ट्रगल and we will become RBI Grade B officer. I want you to comment this below this video that we will overcome our struggles and we will become RBI Grade B officers. I repeat, you have to type, you have to take this oath that we will overcome our struggles and we will become RBI Grade B officers. Life was never meant to be easy and it will never be easy. We just have to adapt. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.